गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है रिमोट ईवीएम्स। तो ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने बोला है कि कोई भी ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म जो अगर हम करने लगेंगे तो हम बिना स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के बिना नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में दिया गया है? आपको याद होगा कि अभी इलेक्शन कमीशन ने प्रोटोटाइप रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसका ट्रायल किया था, लेकिन उसको अपोजिशन पार्टीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हम नहीं लाने दे सकते। तो उसी के कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट दिया गया है। तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है क्या? तो इससे बेसिकली जो आपके डोमेस्टिक माइग्रेंट्स हैं उनको जो है रिमोटली उनको वोटिंग करने का जो है ऑप्शन मिलेगा। इसके लिए जो है एक रॉबस्ट इलेक्टोरल रोल की ज़रूरत होगी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर इस मशीन को बनाया है। ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, कोई नेटवर्क नहीं है इसके अंदर। रिमोट लोकेशंस पे इसको लगाया जाएगा। तो समझ लो कि मुंबई में ये वोटिंग हो रही है और इसमें ये मशीन लगाई जाएगी, और 72 टोटल। अभी क्या होता है कि सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वोटिंग होती है ना, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उसी के ऊपर आप वोटिंग करने जाते हो ईवीएम पे। लेकिन ये जो रिमोट वोटिंग मशीन्स होंगी इनके अंदर 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो अवेलेबल होंगी, और जो यूज़र होगा या जो भी वोटर होगा वो जाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की उसमें से ढूंढकर उस 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से जाकर वोट कर सकता है। तो एक बारकोड स्कैनिंग सिस्टम पर ये काम करेगा। प्रोसेस क्या होगा? जब वोटर अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की वोट करना चाहता हूँ, तो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी कार्ड जो है वो पब्लिक डिस्प्ले एक इमेज के साथ जो है उनको दिखाया जाएगा। और ये जो है जो भी वो वोट डालेंगे वो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है वो उस मशीन में सेव होती रहेगी। इवन वीवीपैट सिस्टम भी जो है वो सेम ही जो है वो आपके फंक्शन पे काम करेगा, आपके आरवीएम में भी काम करेगा। अब ईसी क्यों लाना चाहता है रिमोट वोटिंग? क्योंकि अभी ये देखा गया है 2019 में सिर्फ 67.4% वोटिंग हुई, मतलब 30 करोड़ जो है इलेक्टर्स उन्होंने अपना वोट नहीं किया। क्यों नहीं किया? कहा जाता है कि जो है वो माइग्रेंट्स हैं और इसलिए वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आ पाए और उन्होंने इसलिए वोट नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन को तो हम ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी से डील कर सकते हैं। तो माइग्रेशन की वजह से हम जो है अपने सिटीजन्स को डिसनफ्रेंचाइज नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स यही हैं। माइग्रेंट्स जो हैं वो अपने आप को जो है एनरोल नहीं करते हैं अपने प्लेस ऑफ वर्क पे बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। उनको बार बार जो है वो अपनी लोकेशन को बदलना पड़ता है। तो इसीलिए अब जो है हम उनके लिए अगर हम ये आरवीएम ले आएँ तो उनके लिए भी बेटर होगा, और हमारी जो है डेमोक्रेसी भी जो है उससे ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी। लेकिन चैलेंजेस यही हैं, कोई एक्यूरेट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स तो है नहीं है ना। और माइग्रेंट्स भी क्या हैं उसकी भी आप डेफिनेशन कहाँ से जो है वो एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन कैसे इवॉल्व करोगे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो को जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग के लिए बुलाने के लिए डिसाइड किया है। शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल जो है सॉरी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ जो है वो शंघाई 5 के रूप में जो है बना, और 1996 में इसको रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान ने मिलकर बनाया। बेसिक मोटिव उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था। इसीलिए 1996 की ही मीटिंग में उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया मिलिट्री फील्ड से रिलेटेड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बनाने के लिए बॉर्डर एरियाज़ में, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान में, ठीक है। ऐसे ही 1997 की एक मीटिंग में उन्होंने जो है चाइना के बॉर्डर जो है वो कजाकिस्तान के साथ वहाँ पर म्यूचुअल रिडक्शन ऑफ म्यूचुअल फोर्सेस के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया। फिर जो भी डिस्प्यूट्स उनके थे किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर इश्यूज से रिलेटेड, उसको भी रिजॉल्व इन्हीं एग्रीमेंट से किया गया। 2001 में जब उज़्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन किया शंघाई 5 को, तब इसका नाम एससीओ पड़ गया, और तब से हम 2001 से इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब एससीओ का मैंडेट क्या है? एससीओ का सेक्रेटरीट जो है वो बीजिंग में है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ जो आपकी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो आपका ताशकंद में है। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल और डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी को काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स जो है वो इलेक्ट करते हैं 3 साल के लिए। वेन्यू जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जैसे इस साल जो है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है तो इंडिया हो गया इस बार का वेन्यू, है ना। अब इसको जब शुरुआत में जब ये बनाया गया था, तब जो है यूरोप और यूएस जो है वो इसको एक मिसगिविंग्स के साथ देखते थे। वो कहते थे कि ये एक एंटी नेटो फोर्स बनाई जा रही है, एंटी नेटो ग्रुप बनाया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो मिलिट्री कोऑपरेशन भी हो रहा है। 2005 में अस्ताना डिक्लेरेशन साइन की गई, जिसमें जॉइंट एसपीसी और रिस्पॉन्स दिया गया टू सिचुएशंस जो भी आपके पीस को थ्रेटन करती हैं, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को जो है वो
जो है अगर थ्रेटन करती हैं, तो एससीओ कंट्रीज़ ने कहा कि हम जॉइंट जो है वो अपना रिस्पॉन्स दिया करेंगे। अब मेन गोल्स क्या हैं इसके? म्यूचुअल ट्रस्ट और नेबरलीनेस बनाना, इफेक्टिव कोऑपरेशन करना पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, जॉइंट एफर्ट्स करना ताकि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रीजन में जो है वो मेंटेन की जा सके। लेकिन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने 2015 में एज फुल मेंबर्स ज्वाइन किया, और इंडिया और पाकिस्तान वैसे तो आपस में जो है वो लड़ते हैं, वैसे आपस में मिलिट्री और एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज तो कभी नहीं करते, लेकिन इसमें एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में वो एज मेंबर्स ऑफ एससीओ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं T+1 सेटलमेंट। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर चाइना इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में Trade+1 से सेटलमेंट साइकिल जो है वो अडॉप्ट करने वाली, और आज से ये सिस्टम अडॉप्ट हो जाएगा। अभी होता क्या है कि समझ लो एक इन्वेस्टर ने करना शेयर, जो अपने शेयर जो है वो ट्यूसडे को सेल करे, ठीक है, तो सेटलमेंट होते होते जो है वो 2 वर्किंग डेज लग जाते हैं, और जो ब्रोकर है उसको वो पैसा जो है मनी वो उसको थर्सडे को जाकर मिलती है, मतलब 2 दिन बाद मिलती है। लेकिन वो अकाउंट में क्रेडिट जो है इन्वेस्टर के जाकर अगले दिन, मतलब तीसरे दिन जाकर क्रेडिट होती है। तो मतलब T+2 का मतलब ऐसे क्या हो गया, मतलब जो है 3 दिन बाद जो है जाकर पैसा मिलता है। लेकिन T+1 सिस्टम में क्या होगा कि सिर्फ एक वर्किंग डे के अंदर अंदर ही जो है इन्वेस्टर को मनी जो है वो जो है वो मिल देने की कोशिश की जाएगी। मतलब इतने लंबे टाइम जो आपको लग रहा है, 3 दिन तक लग रहे हैं इन्वेस्टर के अकाउंट में पैसा आने में, वो नहीं लगेगा। ठीक है, आज आपने शेयर सेल किया है तो विद इन 1 वर्किंग डे में, अगर मंडे को सेल किया है तो आपका विद इन 1 वर्किंग डे मतलब ट्यूसडे तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब ऐसे भी ऐसा क्यों करना चाहता है? ये एक शॉर्ट साइकिल अगर होगी तो उससे सेटलमेंट टाइम जो है वो भी रिड्यूस होगा, और जो है कैपिटल जो रिक्वायर होती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो भी बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगी, वरना तो 3 दिन तक पैसा फंसा हुआ है, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है ना। तो इसीलिए जो है इस सिस्टम को लाने को कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। गवर्नेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली ट्रिब्यूट्स पे किए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल पे, रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। तो नेशनल वॉर मेमोरियल 400 मीटर की दूरी पर है इंडिया गेट से। फरवरी 2019 में इसको इनाग्रेट किया गया था। 40 एकड़ में फैला हुआ है। सारे उन सोल्जर्स को जिन्होंने देश के लिए जान दी है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, उनको यहाँ पर उनको जो है वो उनकी लाइफ को कमेमोरेट किया जाता है। इसका आर्किटेक्चर जो है 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स पे बेस्ड है। रक्षा चक्र जो है जिसको आप सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन कहते हो वो सबसे बड़ा है। फिर त्याग चक्र है जिसको सर्कल ऑफ सेक्रीफाइस कहा जाता है। वीरता चक्र जो है जिसको सर्कल ऑफ ब्रेवरी कहा जाता है। अमर चक्र है जिसको सर्कल ऑफ इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। तो जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति थी उसको भी अमर चक्र पे ही जो है वो मर्ज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स। ये आपके इन्वायरमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई ने रिसेंटली ऑक्शन जो है किया है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स का, लगभग 8,000 करोड़ के, और इस साल टोटल 16,000 करोड़ के सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो ऑक्शन करने वाला है आरबीआई। सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स मतलब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले तो देखते हैं। ग्रीन बॉन्ड्स वो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स की तरह स्ट्रक्चर्ड हैं, जिसमें लेकिन जो आप पैसा उठा रहे हो मार्केट से वो आप ग्रीन इन्वेस्टमेंट में यूज़ करने वाले हो। तो ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो ग्लोबली ऐसे कॉजेज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कंट्री जो है हमारी वो कार्बन इंटेंसिटी को कम करना चाहती है, इसीलिए जो है हम ये ग्रीन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट जो है लाने का कोशिश कर रहे हैं। अब इसको अगर हम ब्लू बॉन्ड से कंपेयर करें, ब्लू बॉन्ड्स भी जो हैं वो इसी तरह के ही होते हैं, लेकिन वो ओशन या फिर उससे रिलेटेड इकोसिस्टम्स में वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। रिपब्लिक ऑफ सेशल्स जो है वो पहली वर्ल्ड की कंट्री बनी जिसने फर्स्ट सोवरन ब्लू बॉन्ड नवंबर 2018 में लॉन्च किया था। अब याद रखो, आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि ऑल ब्लू बॉन्ड्स जो हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन सारे ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्लू बॉन्ड्स नहीं है ना। अब क्यों सिग्निफिकेंट है ये? इंडिया की एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 24% से डिक्लाइन हुई है 2005 से 2016 के बीच में। इंडिया इसको और कम करना चाहता है, 45% तक कम करना चाहता है 2030 तक। उसके लिए हमको रिसोर्सेज और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है, अब लेकिन ये देखा गया है कि जो एवरेज इशुएंस है वो सिर्फ 2% रही है बिटवीन 2016 एंड 2022 एज पर आईएमएफ। मतलब जितने जो है सोवरन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करने को कहा कंट्रीज़ ने, उसका सिर्फ 2% वो टोटल इशू कर पाए हैं। और जो यील्ड डिफरेंस है जो कन्वेंशनल बॉन्ड्स और ग्रीन बॉन्ड्स में, वो भी ज़्यादा है एज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज़, अगर हम ग्रीन बॉन्ड्स के कंटेक्स में देखें तो।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग। गवर्नेंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सीजीआई चंद्रचूड़ जो है उनके बेंच ने जो है वो डिसाइड किया है कि वो एग्जामिन करेंगे एक पटिशन को जो चैलेंज कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 376 डीबी ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो बेसिकली ये सेक्शन जो है मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंस बताता है गैंग रेप ऑफ माइनर अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज के लिए। ठीक है, लाइक कि उसमें कहते हैं कि मिनिमम उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो देनी ही पड़ेगी उस कन्विक्ट को। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंसिंग कहते हैं, जिसमें क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जो है वो इससे एटलीस्ट एक पर्टिकुलर पनिशमेंट से नीचे तो आप नहीं दे ही नहीं सकते। ठीक है, जजेस को कहा है इसमें। तो 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ही रूलिंग दी थी मोहम्मद हाशिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स में, जिसमें जो कहा गया कि आप कुछ ऐसे पर्टिकुलर जो है केसेस हैं जिसमें मिनिमम इतनी तो आपको पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। मतलब एक तरह से आपने प्री डिटरमिन कर लिया है कि मिनिमम पनिशमेंट या फिर सेंटेंस कुछ ऑफेंसेस में कितना होगा। ठीक है, तो कोर्ट को एटलीस्ट उतनी तो सेंटेंस देना ही पड़ता है। तो जैसे सेक्शन 376 डीबी के केस में मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो देनी ही पड़ती है। ठीक है, सो अब जो है अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है कहा गया है कि सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में अगर कोई क्राइम करता है तो 3 से 5 साल तक की उसको कम से कम जो है वो जेल देनी ही पड़ेगी। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं इसके अगेंस्ट? आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि इससे जो है जुडिशरी की डिस्क्रिशन और आर्बिट्रेरीनेस कम होती है। तो ऐसा हमने देखा होगा ना कि कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें जो है हो सकता है कि उस कन्विक्ट को कम सज़ा दे सकें, लेकिन बिकॉज मिनिमम जो है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि इतनी पनिशमेंट तो देनी ही देनी है, तो इसलिए वो देनी ही पड़ती है। इससे क्या हो रहा है कि ओवर क्राउडिंग ऑफ प्रिजन्स हो रही है। फिर जजेस को जो है कई बार ऐसी जो है पनिशमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट लगती है उस पर्टिकुलर कन्विक्ट के लिए, लेकिन उनको फिर भी ये पनिशमेंट देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शॉर्ट सेलिंग इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक शॉर्ट सेलिंग रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, उन्होंने बोला है कि जो अदानी ग्रुप है वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं और स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है कितनी सच है कितनी नहीं है ये तो एक डिफरेंट मैटर है, बिकॉज आपने ये भी देखा होगा कि अदानी ग्रुप जो है उनका एफपीओ आने वाला है आज, और उससे बिल्कुल ठीक पहले ये रिपोर्ट निकाली गई है जस्ट टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ दैट कंपनी। तो अब इसलिए जो अदानी ग्रुप है उन्होंने भी यही बोला है कि इसकी जो टाइमिंग है ये एक बहुत क्वेश्चनेबल है इस रिपोर्ट को निकालने की, जिससे कि हमारे एफपीओ को डैमेज किया जा सके। तो एनीवेज हम देखते हैं शॉर्ट सेलिंग होता क्या। शॉर्ट सेलिंग में अब अगर आप सिंपल इन्वेस्टर हो, आप यही करोगे ना कि आपकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होगी कि आप कम प्राइस पे खरीद के उसको ज़्यादा प्राइस पे बेचोगे किसी भी स्टॉक को, है ना। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप बोरो करते हो किसी से स्टॉक। समझ लो आपने मुझे कहा कि आप मुझे जो आप पर्टिकुलर कंपनी में स्टॉक होल्ड करते हो उसके 100 स्टॉक्स दे दो, और उसको आप उसी टाइम हाई प्राइस पर बेच देते हो। ठीक है, आपने उस हाई प्राइस पर जब उस स्टॉक को बेच दिया तो हो गया क्या, उसमें इसमें क्या अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर जो स्टॉक का प्राइस है वो गिरेगा। आपने मुझसे 100 स्टॉक्स खरीद के हाई प्राइस पर उसको सेल कर दिया। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद आपने वही स्टॉक 100 स्टॉक जो है वो मार्केट से खरीद लिए जब वो बहुत लो प्राइस पर पहुंच गए। तो आपने हाई प्राइस पर बेचे थे और लो प्राइस पर खरीदे हैं, आपने वो 100 स्टॉक्स मुझे वापस कर दिए हैं, आपने उसमें से प्रॉफिट कमा लिया है ना, क्योंकि आपने हाई पर बेचे थे और लो पर खरीद कर वापस मुझे 100 स्टॉक्स वापस कर दिए। तो इससे जो आपका डिफरेंस बचा वो आपका प्रॉफिट हुआ, है ना। तो अभी कहा जा रहा है कि शॉर्ट सेलिंग टैक्टिक्स जो है वो अदानी ग्रुप भी ऐसे ही यूज़ करता है। अब ट्रेडर्स जनरली शॉर्ट स्टॉक्स जो है वो बोरो करके ही ऑफ कोर्स जो है वो ब्रोकरेजेस से जो है ये टेक्निक का यूज़ करते हैं ट्रेडर जो है। लेकिन अब इसमें यही है कि अगर मार्केट जो है आपके अगेंस्ट चली गई, मतलब आपने जो है पहले हाई प्राइस पर बेच दिया, लेकिन आने वाले टाइम में भी जो है स्टॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राइस उसने जो है वो अचीव कर लिया, तो उस केस में आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको ब्रोकरेज को जो है वो 100 शेयर्स ज़्यादा महंगे दाम पर खरीद के वापस देने पड़ेंगे। उसमें एक केस में आपका लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये रिस्क रहता है शॉर्ट सेलिंग में भी। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is remote EVMs. This topic is important for your governance section. So recently, Union Law Minister has said that any electoral reform would be carried out only after consultations with all stakeholders, including the political parties. So why this statement has been made? Because you know that EC has recently demonstrated its prototype remote electronic voting machine, so that
we can enfranchise the migrant voters. But the opposition parties were not in favor of it. That's why they declined this offer of RVMs. And now, of course, the ball again is in the court of government whether to implement it so the government has said that we will not be going to implement such a decision without the consultation of opposition parties. So what is a remote electronic voting machine? So to enable remote voting for domestic migrants, this machine has been made by Bharat Electronics Limited with the assistance of Electronics Corporation of India Limited, and it would rely upon creation of a robust electoral roll and identification mechanism. So how does this system work? So it's a standalone non-networked system, and it will be set up in remote locations outside the state. So for example, if you are a migrant belonging to Uttar Pradesh and you are living in Mumbai, so you do not need to go back to your hometown to vote for your candidate. You can just access this remote voting machine in Mumbai itself, and you would be able to vote for your constituency. So as many as 72 constituencies would be allowed to be served through a single RVM. And the how would this would work? Of course, after verifying your voter identity, your constituency card would be read with a public display, and you would be shown the constituency detail and candidates. Then you can of course vote privately, and each vote would be stored constituency wise. So even the VVPAT system would work fine along the same lines with this new technology. So why EC is keen on remote voting for domestic migrants? Because it was found in 2019 that there was 67.4% of voting, which means that 30 crore electors did not exercise their right to vote, which means that migration based disenfranchisement is actually happening. And to address this, EC has come up with new solutions technologically. So, what will be the benefits of RVM? Of course, migrants, because they are reluctant to enroll themselves at the new place of work, because they frequently change their place of work. That's why they do not enroll themselves in the new place. So, we would be able to enfranchise them, and we would be able to allow them to vote for their candidates at their hometown. So, what would be the challenges? Of course, currently we do not have any accurate number of migrants. Also, there is not any particular definition or uniform definition of migrants as of now. Okay. Apart from that, there would be several other concerns also. So anyways, the next topic is Shanghai Cooperation Organization. This topic is important for your international relations. So India has invited Pakistan Foreign Minister to attend the SCO ministers meeting, which will be held in Goa in early May. So what is SCO? SCO was founded in 1996 as Shanghai Five, consisting of Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. And the particular aim of this group was conflict resolution. So that's why in 1996 meeting, an agreement on confidence building in military field along the border areas was signed between these Shanghai Five countries. And in 1997 meeting, they also uh, uh, cooperated, and they signed an agreement on mutual reduction of military forces along China's border with Kazakhstan. Similarly, disputes between Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan on border issues were also facilitated by this particular grouping. So that's why in 2001, Shanghai 5 meeting also inducted Uzbekistan as a member, and it transformed itself into SCO. So what is the mandate of SCO? So SCO has a secretariat which is based in Beijing, executive committee of regional anti-terrorist structure, that is called the RATS. It is based in Tashkent. The SCO secretary general and director of executive committee is appointed by a council of heads of the states for a term of 3 years, and the venue of SCO council rotates between the 8 members. So, because of its disproportionate focus on military cooperation, it was dubbed as anti-NATO by US and Europe at one point of time. So, what are the main goals of SCO? Of course, SCO adopted its charter in St. Petersburg in 2002, and they sought strengthening mutual trust and neighborliness among member states, promotion of effective cooperation in politics, trade, economy, research, and technology, making joint efforts to maintain and ensure peace, security, and stability in the region. So, but of course, all is not well between SCO, because you know that India and Pakistan joined the group in
2015, and both of them do not take part ever in any military and terrorism exercises together, but as part of the SCO regional anti-terrorist structure, they have participated in the single group, and there has been certain contradictions between SCO also. So the next topic is T plus one settlement. This topic is important for your economy section. So after China, India will become the second country in the world today to adopt this trade plus one settlement cycle in top listed securities. So what is it? What is the current system? So currently we operate on a T plus two system, in which if an investor sells your, let's suppose that you sell shares today, the settlement of this trade will take place in 2 working days. So the broker would get money on Thursday, and you would get the money back in your account only by Friday. So it's a T plus two working settlement system. But in T plus one settlement system, the trade would take place in just 1 working day, and the investor will get the money on the following day. So it would not even require large operational or technical changes by market participants. So that would be a better option. So how would it work? Why RBI? I'm sorry, as ZB wants to adopt this T plus one system, because it would reduce settlement time, and it will also free up the capital which will be available for investment in the market. It will also reduce the number of outstanding unsettled trades. So it will also decrease the unsettled exposure which is there for clearing corporations by almost 50%. So clearing corporations are those which are settling the trade. So because the amount of time has been reduced, of course the risk also of uh, facilitating that trade will also reduce for clearing corporations. Okay, so the next topic is National War Memorial. This topic is important for the governance section. PM Modi has recently paid tributes to the National War Memorial on Republic Day, and National War Memorial is around 400 meters from India Gate. And in 2019, PM Modi inaugurated it around. Uh, it is spread around an area of 40 acres, and the aim of National War Memorial is to commemorate all the soldiers who have laid down their lives in independent India. So the architecture of this memorial is based upon four concentric circles. The largest one is the Raksha Chakra, or it is also called the Circle of Protection. The second is the Tyag Chakra, which is the Circle of Sacrifice. Virta Chakra, which is the Circle of Bravery. The Amar Chakra, which is the Circle of Immortality. The Amar Jawan Jyoti flame, which was there at India Gate, has been merged with the Amar Chakra now. So the next topic is sovereign green bonds. This topic is important for your economy section and environment section both. So RBI has recently auctioned maiden sovereign green bonds worth 8,000 crore rupees, and it is a part of 16,000 crore sovereign bond auction that RBI will be undertaking in this current financial year. So what are these green bonds? So basically they are structured similarly to traditional bonds, and they have the commitment that they will be using the proceeds of these bonds for green investment. So number of financial institutions who globally invest in such instruments will also be supporting the cause of environment protection, and they are willing to settle for lower yields because they know that the money is being utilized for green investment, because the government intends to invest in containing carbon intensity, and that's why they need certain instruments that could lower the cost of funding. Okay, so similarly there are blue bonds also. So the basic difference is that all blue bonds of course are green bonds, but blue bonds are using the money to protect the ocean and related ecosystem by investing in such projects. So Republic of Seychelles became the first country in the world to issue a sovereign blue bond in November 2018. So basically, like I was telling you, all blue bonds are green bonds, but not all green bonds are blue bonds. Why is it significant? Because India's emission intensity has declined by 24% between 2005 and 2016, but India has committed that we would be reducing this by 45% by the year 2030. So for that we need resources and investment in a variety of areas, and green bonds could become one of the enabling factors in this context. So but it is this entire sovereign green bonds issuance and operation is not challenge free, because average issuance has been just about 2% of the total between 2016 and 2022 as per IMF. Also the yield difference, that is the difference between the return generated by a green bond is
higher in developing economies if we compare it with conventional bonds. Okay, so what is the next topic? So the next topic is mandatory minimum sentencing. This topic is important for your governance section. So recently, Chief Justice of India Chandrachud G led bench of the Supreme Court has decided to examine a petition which has been challenging the constitutional validity of Section 376 DB of IPC. So what is Section 376 of DB of IPC? So it prescribes minimum punishment for gang rape of a minor under 12 years of age as life imprisonment. So what is mandatory minimum sentencing? It is basically a quantum of punishment which cannot be reduced below the period fixed, which means that you are predetermining the minimum punishment for or sentence for certain offenses. So the courts must mandatorily award this at least this much minimum period of sentencing in certain offenses. So under Section 8 of POXO Act, at least 3 to 5 years of punishment has been prescribed for offences committed under Section 7 of the same Act. Okay, that is for offences of sexual assault against children. So, what are the arguments for and against it? So, of course, the proponents of this minimum mandatory sentencing say that it has acted as a deterrent for serious and harsh offenses because the perpetrator knows that at least this much amount of jail would be happening to me if I commit this particular crime. But the criticism is that it limits the scope for judicial and discretion and arbitrariness, and it is also leading to overcrowding of prisons. Judges might feel that the prescribed punishment which is required for this particular crime is excessively stringent for this person considering the circumstances, but they have no option because they have to prescribe the minimum sentence. So the next topic is short selling. This topic is important for your economy section. So a short seller, Hindenburg Research, has recently disclosed short positions on Adani Group and it alleged that this group is indulged in stock manipulation and accounting fraud in a latest investigative report. So for you to remember this, just see that this Hindenburg Research was also involved in such a similar false story against Bosch company when there was a dealing with the Nokia. So Hindenburg Research has been involved in such malice reporting and malice investigative hit jobs against particular companies, especially when you know that Adani Group is expanding its positions across the world. So because you know that the Adani Group is launching its FPO today, so Adani Group has alleged that this particular hit job by Hindenburg Research aims to derail that FPO, which is considered as the largest FPO in India's stock market history. So, anyways, what is short selling? So, short in general, when you are when you are an investor, what you do is you buy stocks at low price and you sell it at high price. That's how it works. Okay, that's how you earn profit. But in short selling, the technique is a little different. What you do is you sell the stock at very high price and then buy that stock at when it goes at the low price. Okay, so that's how you're not losing any control, but you have made a profit out of it. So the traders who generally do short selling, they do what they do is they borrow stocks from the brokerages. Let's suppose that I borrowed 100 stocks from you, that you were holding. What I would do is that I would sell that particular stocks at when the price is very high, and then I would wait until the price falls down to a minimum level, and then I would buy that 100 stocks back again, and then I would return you those 100 stocks. That's what is short selling. But there is a risk also, because what happens if the prices later on rise again? Then you have sold the price and then you have sold those 100 stocks that you borrowed from me, and later on you purchase that stock again at high price because the time limit of returning these 100 stocks to me arrived, and you had to return it to me. So you bought those 100 stocks back at a very high price. In that case, you have to incur a loss. Okay, so that is what we call short selling. The short selling works on the principle that in the future the prices of that particular stock would fall. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.